पहले पढ़ाई जूम भी चलो So next question. In the compliance with rule 11G of the auditor is expected to check whether the audit trail is enabled for such transaction result in change. What data was changed? Who made the change? That the audit trail has been preserved from 1st April 2021. What is it? A and B or A, B and C? Oh, sorry. Why is that? Same problem. sharing has been disabled. Sharing is disabled. हाँ sharing disable करके reshare किया मैंने but उसके अलावा जो पीपीटी खुला ना वो बंद कर दीजिए ओपन वाला पीपीटी ये बंद कर दीजिए खाली जूम खुल कर बंद हो जाएगा ये बंद करो आपने कितने मेल से किया नहीं डाउनलोड फोल्डर से किया ये ना क्यों नहीं आ रहा है मेरे को इसमें करो स्क्रीन को टैली भी चालू करूँ तो टैली लगेगा स्क्रीन पूरा स्क्रीन अलाउ स्क्रीन आ हाँ कभी टैली चालू करूँ तो भी टैली के लिए FF आप चालू कर लीजिए Till the time we do not have the So Tally के अंदर how many versions are our clients using? कौन सा versions अभी use कर रहे हैं? Especially for the Tally 9. Complete. Proprietors are still there, maybe. Okay. ठीक है. 7. So उसके बाद में Tally 9 आया. उसके बाद में Tally ERP 9 आया. 8 was there for a brief time. Vajpayee is very correct. So 8 आया था वो भी brief time के लिए. फिर 9 आया and तो 4.5 आया. Some people might. Yes, okay. Right.
So इसका क्या आंसर बताया आपने? What data was changed? Who made the changes and when? That the audit trails have been preserved from 1st April 2021. How many for E? How many for C? D? D. Ideally D. Right. Sahi jawab. Okay. So this is more on Tally's internal working, that a data entry operator is making a receipt entry, is selecting on accounts for debtors management, and because of that, aging is a big problem. What to do for the auditor or for the accountant? Train him bill by bill, restrict Vinod to select on account. I'll be taking up some part of the security control also. So that's why I have taken up this question. Disallow Vinod to enter receipt transaction at all. See, right. Okay. So, audit trail is intrinsically linked with security control. What I want to show out here is that as and when we look at audit trail chapter, and when we download the latest software, we'll run the latest software, whatever it is, we'll understand the technical parameters. Along with that, we also need to understand how to keep the security. If the security is not there in place, you will still be, not completing your duty completely, at least from an accounting perspective, whether you have ensured that proper controls are there or not. Okay. So the answer is, of course, 3, both 1 and 2. Okay. So this was what I had planned, that basics of MCA requirements. I think Chintan Bhai has already taken up. I'll not take much lead on that because there is not much which is can be discussed. It was very, Chintan Bhai was very right. Globally, no similar application is required across the world, and auditors are supposed to exercise their professional judgment while reporting on such matters. Now, since the period has already started, and since many of us have already using ERP9 or maybe using some other software where the audit log is not there, so your need for exercising the professional judgment has arisen. So please take care while we are putting the audit report. Okay. So as I had mentioned that Tally, when 2021 notification came, it was a big jolt for Tally, and it was a big jolt for all the MSMEs or SMEs who are maintaining, and auditors as well, who are maintaining the data on Tally. Why? Because the basic part of the Tally was flexibility. Why you are using Tally is, I love the simplicity and the flexibility. I can change while the government wanted to check or whatever it is, but it is a flexibility which ensured that the software was used again and again, and more customers were using it. So when 2021 notification came, it said very clearly that we are not complying with the notification, and thankfully government extended that to 2022. Now during that time, 2021, and when they had extended 2022, it came out with a different version somewhere in, if I'm not wrong, October or November 21. It came out with a different version where it said that if from 1/4/22, if this is applicable, if this clause is applicable, then you can use this software. Now, one of the important component of the software was that the audit trail, the last point, the audit trail feature has not been tampered with.
and it should not be allowed for the users to disable or enable. It should be on an auto mode. So for that, in their wisdom, Tally decided that we would need a completely different software. Okay. For that, they brought out the software called Tally Prime Edit Log. It has all the features of Tally Prime, but along with that, it has also have the feature of Edit Log. Now, what does this Edit Log feature does? It does, you are fully complying with at least basics of the requirement. While there is no certification agency which has been certified right now, whether any software is compliant with the government requirement or not, but whatever little or whatever one paragraph or two paragraphs we may understand from the government notification, they are complying with definitely. Okay. It's not reversible at any cost. If once you click it in configuration, the EN selected, then it is not reversible. They cannot disable it. It is not the ticking of the software. It is a software in itself or different software. So it cannot be reversed. Yeah. Then It cannot be disabled. the transaction, even if disabled, it will have a tree. We will come on that, sir. Okay. Yeah. We will come. Why is he saying that and uska kya? What is it that we need to ensure? वो हम लोग देखते हैं. Okay. So for the users who are having proprietorship or LLPs where the edit log functionality is yet not compulsory, for them they can continue to use Tally Prime, and also for the companies where MCA requirement is compulsory, one user can use Tally Prime edit log. Okay. Right. So what you guys need to do when we are working with Tally Prime, first and foremost, is to download the software Tally Prime Edit Log. I know some of you might have downloaded, but as user said that we are yet on Tally ERP 9, I have also not downloaded on this machine. And if you all allow, I will download it in front of you, run the setup, activate the license. So you can come to know the entire process. Is that fine? Yeah. Okay. Please. पूरा शेयरिंग होना चाहिए नहीं मेरे को पूरा स्क्रीन शेयर करो स्क्रीन शेयर किया ओके ये शेयर कर जूम करके ओपन करना वो ओपन कर अरे नहीं सेटअप रन करना है पहले विंडोज का सेटअप रन करना है फिर वो सेटअप रन करना है ऐसा है ना तो पूरा शेयर पूरा स्क्रीन दिखता है वो क्यों नहीं आता ये कौन सा है नहीं मेरा ये सेटअप रन करना है अपना टाइम नहीं तो सेटअप रन करूंगी लोगों को क्यों नहीं इस रूम में है ना पॉज कर दो रिकॉर्डिंग पॉज Excel is also kind of a database included. So SQL is a different higher up. You cannot change over there. Depends on what Excel is. अभी यहाँ का अभी देगा तो अंदर आओ नहीं तो फिर नया बंदा पड़ेगा. You cannot even disable it. Friends, we'll have to go to Tally's site, Tally's website, and we'll have to go to this tab called download. And once we go to this
we've got two versions, Tele Prime 2.1 and Tele Prime 2.1 edit log. Okay, this is there. I have already downloaded because of time jata tha. So I have downloaded it and kept it out here. Setup run kar raha hu. Okay, so I'll just run the setup. Here Tele Prime was there, so मैं उसी के application पे update कर रहा हूँ. You could have done it at different path also. That is not a problem. Keep both of them together. Yes. We can keep both of them. Exactly that. I was हाँ, done. Sure. Simple. Once you get this option, activate the license. Okay. So now there is no company out here in this folder. Okay. There is some data which is there. I don't want to get into it. Yeah. So Dhruvi Electricals is a demo folder which I have downloaded, and I have just opened this company directly. It is not asking for any kind of migration. Now let me download a demo company so that suppose we have some demo company on Tele website also. Yeah. I'll close this company. As I have downloaded a new company, it will ask for this question. What migration required or not? You select, of course, you do a backup of that and then select migrate. So very quickly, all the things just zipped out in front of us. But what had actually happened is that in case any of your voucher numbering has been kept as automatic, they have shifted to manual automatic, because edit log, the major problem which was coming for the users in Tally generally also was that the numbering, if they have kept it as automatic, the vouchers were getting shifted again and again. So to counter that and to ensure that your vouchers numbers do not get shifted, it has changed the voucher numbering from automatic to manual update. Okay, manual automatic. I mean, it remains as automatic only, but only thing is that once a voucher is got the number, it will not get shifted. So 1, 2, 3, 4 on 4 dates you have entered a transaction. On 5th, you realize that I have to enter a transaction of 3rd. Okay. So in manual auto, what will happen is that you will not get the number as 3,
you will get the number as maybe 5. Okay, 5 number, but the date would be 5th only. Okay, so by that could be a challenge where the users are, when they are using manual auto numbering, they are not having a synchronized thing. But Tally has got a functionality where you can see the voucher numbers in one sequence. Happened. It will not be ABC. It will be 5th number which will get. If you wish, you can maintain 3A, 3B. Tally doesn't stop you, but can you read for it later? No. So now on 15th of April, we have shifted this company from a normal prime data to edit log data. Where do you know that it has got shifted? It is this company edit log. Migrated from Tally Prime. Now, if there is no security as it is there in this company, it will just inform that username is unknown. So as I said, it is very important that before we migrate from the earlier version to Tally Prime, if we should have basic security in place, that is who is the admin, who is the users who are using it, so that their name gets keep recording on each and every aspect of this. Okay, so let us start with the functionality of editing or checking that how the software behaves. Okay, so company data migrated from unknown, so that's fine. But if I have to start security control, what is the first step that I have to do? User ID, but I don't get user ID out there. Then from where? Yes, Tally alter. Okay. In F12, they have given an option, use user access control. Okay. And because of this is the question I'm getting. Control user access for company data. I say yes. Okay. Administrator, today we have Chintan. Enable Tally audit features. Please do not mix it with the audit features which are required from our auditor's perspective, or it is there. It was a earlier option from 7.2 which is coming. Not much usage it has it. So you can keep it as no currently, and disallow in educational mode is when if you have to protect your data from getting opened up in a unlicensed mode. Pirated mode में नहीं open होना चाहिए, unlicensed mode में नहीं open होना चाहिए, उसके लिए है. Nothing to do with our audit trail perspective right now. Once we have activated that, now we get a question. Change user change password, user roles. Okay, users and password. Understand, Tally has got the functionality of security in terms of roles, never in terms of person. While Chintan is an administrator for this database, he can do anything as far as the data entries are concerned. But as such, if we have to give the rights to the users, then we will have to activate proper user levels. Okay, so user roles, we call it as a user roles. How do we activate that? So there are 4 roles which are by default given. Data entry, but you can give your own role also. Okay. So if you just see what is there in data entry, there are a lot of disallowance and allowance which is there. So I've just accepted that. I'm going to use the default one only, but I will first create users and password. Okay. So I will create a user called B, password B,
as of now. Owner D. Right? I've created 2 users and I have not got into the major security control part. That we will come to it later on, little later on. Now, this is the company and these are the transactions which are already there in the system. As Chintan Bhai explained to us that the software should have a trail of any modification which is done in the transaction, any modification which is done in the masters. Okay. First, we'll take a simpler part of transaction. So we'll take a simple transaction, alpha provision, a payment entry of 3,000 was made by 5,000 to 5,000 and accepted it. Okay. This is a change that I have made. Any other change that you feel? Okay. एक चेंज करता हूं. Sorry. ये जो Sunday to Monday है F2, I will put it on 29th of March 21. Date change. नहीं ईयर चेंज नहीं है, उसका क्रेडिट लिमिट नहीं है. सो संडे टू मंडे गया मैं, उसका क्रेडिट लिमिट अलाउ करने के लिए लेट मी चेंज द क्रेडिट लिमिट. 10,000 से 1 लाख कर देता हूं मैं. तो ये मैंने मास्टर भी मॉडिफाई कर दिया इन दिस प्रोसेस. ओके. हाँ, कंट्रोल ए. अच्छा, फिर भी नहीं आया. सो नाउ आई हैव टू मेक इट फ्रॉम 10 lakhs. राइट. तो वो डेट भी चेंज हो गया, 29 तारीख को चला गया वो ट्रांजेक्शन. नाउ इन दिस एंटायर ईयर यू हैव टू फाइंड कि भाई मेरे ट्रांजैक्शंस कौन से हैं जो मॉडिफाई हुए हैं और कौन से हैं वो डिलीट हुए हैं. अभी तक डिलीट नहीं किया मैंने. एक डिलीट कर देता हूं, ड्रॉइंग ऑफ द ओनर. ठीक है, 3 अप्रैल का ट्रांजैक्शन था, उसको डिलीट कर दिया. उसके लिए टैली ने एकदम सिंपल रखा है, absolutely simple. If you have to find that how many transactions are altered, how many transactions are deleted, okay, in the entire bunch of maybe 600 or 630 transactions, you just have to click on one button. Call anyone who has already checked it. Sorry, नहीं, किसी ने यूज नहीं किया है अभी तक. Control, somebody said. Control report. Nahi. There is one single button that you need to remember. अगर आपको टैली यूज करना है and audit trail उसका चेक करना है, there is one single button that you have to remember. Somebody said Alt Q, लेकिन वो भी बाद में. हाँ, वो बाद में आएगा, वो भी मैं बताता हूँ कभी. ओके. सो आपको करना है कंट्रोल बी, बेसिस ऑफ वैल्यू, शो रिपोर्ट फॉर व्हाट, ऑल वाउचर्स, अल्टर्ड वाउचर्स और नॉन अल्टर्ड वाउचर्स. अल्टर्ड वाउचर्स, यस. देन द सेकंड क्वेश्चन कम्स, include deleted vouchers. Yes. Type of voucher entries. Now here inventory and non-inventory you can keep it separately if you wish, if they are many, so that you are able to classify. So those which may have accounting entries only, that is the journals
or inventory entries like receipt note or dispatch note or those things. So as of now, we say all entries, okay, and exclude order vouchers. Friends, here it is. Okay, Control B. If you, I've just downloaded a sample data. After that, I made a 2 modification, and in that 2 modification, I find that there are 3 entries which has been tampered with or changed with. I'm not saying tampered, but changed. Sorry, this has been modified. Okay, so deleted entry का original version आएगा। यहाँ पे जाने के बाद में आपको एंटर करना है, ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्जन, क्योंकि फर्स्ट वर्जन प्रीवियस रिकॉर्ड था, सेकेंड वर्जन एंड प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आपको चेक करना है सो आपको एंटर करना है, कुछ भी नहीं। सो इन द एडिट लॉग कोई भी वाउचर प्रैक्टिकली डिलीट नहीं, डिलीट हुआ है, आपकी स्टैटिस्टिक्स में से डिलीट हो गया है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंपैक्ट नहीं कर रहा है, बट उस वाउचर का ट्रेल रह रहा है। इट इज नॉट लाइक अ रिसाइकल बिन विच सम ऑफ द कस्टमाइजेशंस वर देयर अर्लियर, तो भाई आप डिलीट कर दो, वो एक्चुअली वो डिलीट नहीं होता था, ऑप्शनल में जाके बैठ जाता था, वैसा भी नहीं। इट इज एक्चुअली डिलीटिंग द ट्रांजैक्शन, बट उसका ट्रेल रह रहा है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई अगर आया तो मेरे माइंड में आता है, यार मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं रिस्टोर नहीं कर सकता हूँ, मैं इसमें से देख के वापस से एंट्री पंच कर सकता हूँ, बट एक बटन दबा के पूरा रिस्टोर नहीं कर सकता हूँ। तो डिलीटेड वाउचर्स आर देयर इन द सिस्टम, समवेयर इट इज देयर। ओके, ये ट्रांजैक्शन हमने जो डेबिट कौन सा हुआ था, क्रेडिट कौन सा हुआ था, लेजर एंट्री 2, ये ड्रॉइंग्स ऑफ द ओनर वाज डेबिटेड, फर्स्ट लेजर एंड ओनर्स कैपिटल वाज क्रेडिटेड, व्हाटएवर। ओके, तो ये एक ट्रांजैक्शन था। संडे टू मंडे का फिर अंदर गए, क्योंकि 3 ट्रांजैक्शंस थे, तो इसको ऑल्ट क्यू करके चेक कर दिया, प्रीवियस रिकॉर्ड एंड अल्टर्ड रिकॉर्ड। ओके, सो इसमें भी आपको वो दोनों मिलेगा, एंड व्हेन यू गो एंड इनसाइड एंटर, यू फाइंड दैट क्या चेंज है। द चेंज विच इज देयर इन रेड इज द चेंज, द चेंज विच इज देयर इन रेड विच इज द चेंज। अदरवाइज हाँ, हमने एक ट्रांजैक्शन में खाली डेट चेंज किया था, 31 से 29 किया था। इफ यू आर ओके, यू अलाउ इट, और अदर यू डोंट रिपोर्ट ऑन दैट। एंड द थर्ड वाज, सेकंड वाज दिस, इसमें भी जाके ऑल्ट क्यू। सो चिंतन हैज डन दिस चेंज ऑन 15th April 1736, 8 minutes अर्लियर, 3000 को 5000 किया था। ओके, राइट, तो ये हो गया हमारा बटन। लेट्स चेक, कंट्रोल बी, ओनली अल्टर्ड वाउचर्स, कंट्रोल ए, डेट एंड टाइम स्टैम्प है। 538 को चिंतन भाई ने डिलीट किया था। डेट एंड टाइम स्टैम्प कहां से पिकअप करता है? Exactly. That was my also question. System date कहाँ से pick up? System with system. Is it with direct pickup from the machine and from the Microsoft, or it has a inbuilt time system? टेक्निकल है थोड़ा सर, that's what I understand। अगर चिंतन को करना है, मस्ती करना है, और वो डेट चेंज कर लेता है, सिस्टम का डेट चेंज कर लेता है, और तो टैली जैसे चालू करेंगे ना, वो लाइसेंस मोड में नहीं होगा, एजुकेशनल मोड में चला, एजुकेशनल मोड। दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। अभी मैंने एडिटर के बाद में ऐसा थॉरो एडिटिंग या ऑडिटिंग नहीं किया, बट वो सिस्टम टैली ने पहले भी बनाया है कि लाइसेंस को जब हम लोग एक्टिवेट करते हैं, तो उनका जब सिस्टम डेट है, कंट्री है, वो सब मैच होना चाहिए उनके सर्वर से। अगर आप जब एक्टिवेट करोगे वो लाइसेंस ही नहीं चलेगा ना आपका, एडिटिंग अलाउ नहीं करेगा। checking the system date with the server, with their own server. That means, yeah, they are not picking up the tally. Okay, they have got a control. They are picking up from here, but they are having a control. Yes. With their own server. Yes. At each entry level.
नॉट इनहेरेंसी, जब भी टैली चालू किया तभी ना, अभी टैली चालू करते करते आप डेट चेंज कर दोगे तो वो एजुकेशन में तुरंत चला जाएगा, ऐसा भी होता है। अगर आपने shut किया, हाँ अगर आपने टैली फिलहाल शट डाउन किया, कंट्रोल क्यू करके बाहर आ गया, टैली से बाहर आ गया। टैली से बाहर है, टैली शट डाउन हाँ एंड फिर कंप्यूटर के ऊपर आपके मशीन के ऊपर आपने डेट चेंज किया और फिर टैली स्टार्ट तो टैली स्टार्ट करते वक्त सर्वर उनके सर्वर में चला जाता है। तो लाइसेंस अच्छा ठीक है, चलो वो एक ऑडिटिंग का पार्ट हो गया। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग टेक्निकल करने जाएंगे तो बहुत चीजें सामने आएगी। टैली विल वर्क, हाँ इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, टैली विल वर्क। ERP software also, हाँ and it picks up from this, and you can go and alter that. And ठीक है। the ERP accepts it. तो यस वी कैन थिंक ऑफ दोस थिंग्स कि ये ऐसा भी हो सकता है, सिस्टम डेट चेंज करके करेंगे। बट सिस्टम डेट अगर आप चेंज करते हो तो देयर आर अदर थिंग्स विच आपका विंडोज भी वर्किंग नहीं होता है, एंड देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस। एंड फ्रॉम एन system auditor perspective, I'm not saying from an auditor perspective, but from a system auditor perspective, it is not allowed to change the system date as and when you wish to do it. So that is a different control, different discussion. IT controls में हम लोग जाएंगे तो वो एक अलग मामला हो गया। But क्या हम टैली कहाँ से ले रहे हैं, मैंने उतना आपको एक्सप्लेन कर दिया। Okay, let us now move forward. हाँ, please. In this, three transitions were modified. One was deleted and two were changed. Yes. In one, we edited the master data. हाँ. From I think 10,000. Credit limit. Credit limit तो configuration है ना। And if you get the अच्छा, मास्टर्स की बुक्स, चलो देखते हैं, चलो। So right, तो टैली के अंदर आपको जो ERP 9 था, आपका कोई क्वेश्चन था इससे रिलेटेड? क्या? हाँ, फिर बुक्स में 1, 2 and 4 आएगा बहुत से नंबर, राइट? 3 Yes. will not be there. yes, let's see. Image audit trail what you showed. Can it be printed? Can it be? Can we have a copy of it? हाँ हाँ, वो उस पे भी आता हूँ, that is right, I agree with you. हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो उस पे आए नहीं है, मैंने हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला नहीं आएगा, मैंने बोला अगर टैली में आप लोग इतने सालों से काम कर रहे हो, अगर आपको मास्टर्स देखना है तो आप कहाँ पे देखते हो? वेयर डू यू सी द मास्टर्स? हाँ, यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो, बट यहाँ पे नहीं है क्रिएट अल्टर चार्ट। कहाँ पे देखते हैं मास्टर्स कहाँ पे देखते हैं हम लोग? बट देयर इज वन प्लेस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिविजुअल मास्टर्स देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर राइट। बट देयर इज वन प्लेस विच इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज कॉल्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट, ये पहले था डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, इसको उन्होंने रीनेम करके चार्ट ऑफ अकाउंट्स कर दिया, सामने कर दिया। ओके, इसको भी चेंज व्यू हम लोग करते हैं तो ये एक अच्छा फॉर्मेट दिख लेता है, मेरे को ये काफी अच्छा फॉर्मेट लगता है। नेम, लेजर नेम, अंडर व्हाट इट इज, सो दिस यू कैन जस्ट नोट इट एंड एक्सपोर्ट करना हो एक्सेल में वगैरह में, तो ये अच्छा बेटर है rather than the old trial balance नीचे से जैसे वैसे। Coming back to our working, जैसे मैंने पहले बताया था, when we are talking of transactions को देखना है कौन सा ट्रांजेक्शन डिलीट हुआ है, अल्टर हुआ है, हम लोग डे बुक में गए थे, डिस्प्ले डे बुक, एंड देन वी चेक्ड इट विद अ बटन कॉल्ड कंट्रोल बी। द सेम बटन वर्क्स आउट हियर, कंट्रोल बी। ओके, सो कंट्रोल बी show report for all ledgers, altered ledgers, non-altered ledgers. So we say altered ledgers. Include deleted ledgers, yes. So only one modification was done, master एक ही modify हुआ, but alt Q 3 बार modify हुआ है। Okay, अब ये 3 बार क्या हुआ है?
This was previous record. From 10,000 to 1 lakh credit limit. Now, what I want to say that any change, whether it is a change in name, whether it is a change in structure, whether it is a change in address, everything is recorded. इसीलिए वो उतनी सारी फील्ड है. और ये F12 का जो क्रेडिट लिमिट है, that also is very important. You are very right, चिंतन भाई and others, that क्रेडिट लिमिट से मेरा कंट्रोल मालूम पड़ता है मेरे को कितना देना है, तो वो भी आपका रिकॉर्ड हो जाता है. 10,000 to 1 lakh क्या वर्जन 1 से वर्जन 2 एंड वर्जन 2 से मैं ये प्लस माइनस कर रहा हूं. आई एम डूइंग अ प्लस माइनस. सो ये मैंने प्लस किया तो वर्जन 1 एंड वर्जन 2 आ गया. प्लस माइनस किया तो वर्जन 2 एंड वर्जन 3 आ गया. एस्केप करके जा सकता हूं, लेकिन प्लस माइनस भी आप लोग ध्यान रखिए प्लीज. सो 1 लाख से 10 lakhs. Any change? हाँ? ये रहा आपके बाजू में ही बैठा है वो जो सब मस्ती कर रहा है. हाँ. और कब चेंज किया चिंतन भाई को? 537, 538, राइट? Who, what, when? Who, what, when? Why पूछा है? Why पूछा है? अगर आप why पूछोगे तो आप खाली यही देखते रह जाओगे. Ideally, yes. There are, see, the edit log or audit functionality is a new requirement which government is asking. अब वो उसको कैसे यूज करने वाला है, कितना यूज करने वाला है, उसमें से क्या चाहिए, we all are still under suspense. हमको भी नहीं मालूम है क्या है. 17-18 जीएसटी के नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप फाइल करो तो ए और बी इनवॉइस लेके फाइल करो. प्रॉब्लम उनका था. सी प्रॉब्लम वाज दैट विद द पोर्टल कि वो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इनवॉइसेस का नंबर, या पोर्टल कुछ प्रॉब्लम दे रहा है एंड उसकी वजह से हमको रिटर्न फाइल टाइमली करना है. तो वी वर मैनेजिंग देयर वर्किंग कि चलो रिटर्न तो फाइल कर दूं, बाद में देखा जाएगा, क्वेरी आएगा. वी वर टोल्ड हाँ देखा जाएगा. एंड दैट वाज अभी उसकी नोटिसेस आ रही है एज आई एम टोल्ड टू अंडरस्टैंड ये है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम पोर्टल में रहा होगा, यूजर्स का भी मिस्टेक हो सकता है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अभी इसको वो कैसे यूज करने वाले मालूम नहीं. इसके लिए उन्होंने बोल दिया आपको सॉफ्टवेयर रखना है, सॉफ्टवेयर के साथ में सॉफ्टवेयर का ट्रेल रखना है. ये जो ट्रेल अभी हमने देखा है, ओके, अब वो ट्रेल को कितना यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, पहले तो ऑडिटर को ये डिफाइन करना है कि उसको क्या करना है. बिकॉज एनी चेंज आई एग्री विथ यू भावेश भाई कि ऑडिटर को करना है, बट यू अंडरस्टैंड दैट there could be n number of change which is not related to anything remotely which is fraud. तो चिंतन भाई ने बोला आया ऑडिट कह रहे यार नरेशन अपडेट कर ले, क्या उसमें फ्रॉड है? नहीं है. क्या चिंतन, अरे वो छोड़ो, पूर्वी वही बैंक रिकंसिलिएशन डेट दे रही है. अब एनी चेंज इज अ चेंज. तो पूर्वी का बैंक रिकंसिलिएशन डेट इज आल्सो, एंड देखा उसने रॉन्ग अपडेट किया तो 2 बार बैंक अपडेट किया उसने. सो दैट इज आल्सो चेंज. Now an auditor which is supposed to normally check what is there in the returns which is filed and what is there in the books of accounts which is finalized, उन दोनों को सर्टिफाई या उन दोनों को ओपिनियन देना है. हाउ दैट इज प्रिपेयर्ड, वो उतनी बार जाके चेक करेगा. 15 बार अगर आपका ट्रांजेक्शन चेंज हुआ तो 15 बार वो देखेगा कि क्या वो 15 बार क्या चेंज हुआ है. आई डोंट नो हाउ मच फंक्शनैलिटी दैट ऑडिटर को उतना पैसा मिलता है कि नहीं, पहले तो वो डिसाइड करना है. हाँ नहीं, एक्सेप्शनल की लिस्ट ही बहुत बड़ी है. सर आप बताओ, मैंने बैंक एंट्रीज की, जब अपडेट कर दिया, पूर्वी आई मंथ एंड पे उन्होंने बैंक अपडेट किया रिकंसिलिएशन में, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर नाउ इन द ऑडिट मोड, अल्टर्ड मोड. नाउ वेदर चिंतन इज सपोज्ड टू ऑडिट ऑल द थिंग्स कि कितनी बार बैंक रिकंसिलिएशन डेट अपडेट हुआ. अ चेंज इज अ चेंज. इफ यू से दैट ऑडिटर इज सपोज्ड टू चेक ऑल द चेंज, देन how much work he is going to do and why is he going to do it? I don't know. So materiality is that, I mean, that is what we say, whether
Yes, as of now, that is the requirement, and that is what I am saying. That requirement is satisfied. Bus, that requirement is satisfied. But whether that. Yes. 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 I'll come in. Yeah, in relation, the only requirement that I understand and we all understand is that the software should have a trail, and that software, that trail should not be disabled. Let me assure you that once you update it in edit log, that trail will not be disabled. Now, in case the accountant has or the company has kept it in edit log, you at your place has not kept your edit log. Okay, ये भी होता है कि हाँ. So उस केस में क्या करेंगे, हम लोग को टेली प्राइम नॉर्मल भी डाउनलोड करके एक बार माइग्रेशन करना पड़ेगा, बट उसमें ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा. एडिट लॉग में रिकॉर्ड हो जाएगा कि दिस डेटा वाज नॉट देयर इन सच एंड सच पीरियड. यस, मेरे पास वो एक कंपनी है, मैं दिखाता हूँ. अपन डेटा बैकअप लेंगे तो ये अपने आप इसका बैकअप आ जाएगा ना. यस, जब भी इसको आप माइग्रेट करेंगे आपको दिखेगा इतना पीरियड का है नहीं. ठीक है ना, आईपी एड्रेस क्या वो भी जरूरी है. आईपी एड्रेस आता है ना. आई डोंट नो वेदर यूजर्स का नाम आना किसने किया है वो आता है, बट आईपी एड्रेस. Sir, software log, what you are talking about is a software log. Maybe that is not the requirement which has understood, because that would mean that कौन से desk से किया है. अब एक ही desk. This system, see, suppose there are identity system. So this system has done this thing, say US dollar might be ID and password. Okay, it has been remotely changed that also. I said, no, I'm not done it. Oh, then it says, Mr. Wait, this has been done at Mysore and this system. Is this not that? IP address में ये date and time रिकॉर्ड कर लेता है. तो फर्स्ट इज ऑप्शन, इफ यू हैव नॉट डन इट तो टाइम तो मान पड़ जाएगा, ये टाइम में था ही नहीं जो भी था. सेकंड थिंग, हाँ, या सेकंड थिंग इज दैट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द दिस थिंग IP address, now many systems are working in a single server mode where there are single IP but multiple logins. Their individual IP रहता ही नहीं, क्योंकि आप Citrix पे हो या VPN के डायरेक्ट सर्वर पे आप एंटर कर रहे हो. So where is the question of having an IP address for it? तो उस वक्त भी यूजर लॉगिन which will become important. Anyways. Here I think you are not be able to listen one question from here. Yeah. Now, what is the majority where the changes people make it? Opening stocks. Okay. हाँ, जो पिछले साल स्टॉक कितना था 379, this time के 739. How? Nobody knows. So in case that okay, So at the end of the year you were maintaining a stock of 739. Now at the beginning of the year you have chosen, so somebody has gone and changed it. The point which he said is that it gives the audit a day. So while what you're saying is related to the stock items, opening में भी ये एक मिनट ये 124.80 है. Yeah. All the audit edit logs, can we have it one screen? Who will need 5,000? One second. See, if I want to, master is separate, but even the edits of the transactions. All the transactions edit at one report. So I can then identify which should I, put more effort, not to put more Okay. effort. Yeah, I'll come on that. Sorry. I'll come on that. Split the data. हाँ. split का बता रहे थे. हाँ, मैं split का बताऊंगा, but question. I'll be splitting the data. Why is it important? How it is to be done? और क्या आपका question क्या है? Okay, so let us take that example. 1/4/21 to 31st March 22.
ओके दैट इज द, वो एडिट लॉग में था या नहीं था? फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं था। अभी आपने 15 अप्रैल 23 को 21 22 और 22 23 भी लेके आ गए। ओके तो अभी से आपने कुछ भी आपने सॉफ्टवेयर में काम किया, वेदर इट इज रिलेटेड टू, अभी जैसे मैंने भी 1920 के डेटा में काम किया तो दिखाया, तो आपने पिछले साल में काम किया, अभी से ये एडिट लॉग में जो भी काम किया वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके दैट इज वन थिंग। अभी ऐसा आता है कि आफ्टर 1/4/22 से 31 मार्च 23 आपने एंट्री किया, और सारा 1/4/23 से 31 मार्च 24 तक एंट्री किया, एंड ऑन May June 24 you decide that let me split the data. Okay, so once you split the data for the 2 months which you have entered, आपका एडिट लॉग भी साथ में जाएगा, वो भी साथ में जाएगा। हाउ टू स्प्लिट आई विल जस्ट शो, बट वी हैव चेक्ड इट कि आपका जब स्प्लिट होता है तो स्प्लिट किया हुआ जो बैलेंस पीरियड है, ऐसा नहीं कि वो पिछली कंपनी में रहता है, दैट आल्सो गेट कैरिड फॉरवर्ड। समबडी आस्क्ड दैट बैकअप अगर मैंने ले लिया है तो बैकअप हम दो तरह से लेते हैं, एक तो टैली का फोल्डर जिप करते हैं और भेज देते हैं, और दूसरा है टैली बैकअप। तो टैली बैकअप ऑलवेज प्रॉपर एंड यूज दैट मोड ओनली, क्योंकि फोल्डर में अगर करता है तो ये सारी फाइल्स जो है वो फोल्डर में है, 10,007 10,010 ये 10,007 फोल्डर्स में, अगर वो फोल्डर में सारी फाइल्स आपकी कॉपी पेस्ट नहीं हुई है तो दैट मे नॉट गिव यू अ प्रॉपर ट्रेल ऑफ दैट। तो आइडियली डू अ टीबी के टैली के अंदर से बैकअप लो एंड देन सेंड इट और रिस्टोर इट, व्हाटएवर इट इज, दैट इज व्हाट द आइडियल सिचुएशन इज। While I have already done 10,007 को zip किया और मेल किया और डाउनलोड किया, तो that is also okay, but not suggestible, because उसके अंदर जो ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड जो टेक्निकल फाइल्स है वो उस डेटा फोल्डर में ही। So having that exchange is a slightly dangerous working, but can be done, right? Also, as of today, the requirement is only to report whether the trail is functioning or not. It means whether the CCTV is working or not. What CCTV has recorded, क्या deletion modification हुआ है, वो भी audit report में देना ही नहीं। While audit report में देना नहीं है, I agree with you. More questions in the management की क्यों किया? हाँ, किसी ने बोला था कैश बुक मेंटेनेंस ऑन अ डेली बेसिस। आई एम नॉट वेरी दिस थिंग, बट अगर आपने 30 जून को 31 मार्च की कैश बुक लिखी है, दिखते ही पूरे साल का एक बार, while that would tantamount to you report or not, that is a professional judgment that you have to take, or I don't know whether that would mean that करना है कि नहीं, I'm not saying, but as such मतलब कोई there is no bar currently what I understand that you are not supposed to do it. Only requirement is that the trail is there, yes or no, बस। और अगर इसको yes लिखने के बाद में उन लोग कैसे यूज करेंगे वो आज आपको मेरे को किसी को नहीं मालूम। Also, this tally data which is there on each entity's own desktop or hardware or wherever, is it also available with tally in their server? Never. टैली में खाली जो जाता है सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन जाता है कि वो लाइसेंस कौन से रैम से कौन से यूजर नेम, जो माय कंप्यूटर में आपका यूजर नेम है उससे यूज किया है। उसके अलावा टैली के अंदर सर्टन सॉफ्ट बीट्स भी जाता है, जैसे आपका जीएसटी नंबर जाता है, बिकॉज ई इनवॉइस के साथ हम लोग ट्रैक करते हैं। अगर आपने ये डेटा में वॉल्ट एक्टिवेट किया या सिक्योरिटी कंट्रोल एक्टिवेट किया, व्हाइल यूजर नेम पासवर्ड डजंट गो, बट उन लोगों को ये मालूम पड़ता है कि कितनी कंपनीज में उन्होंने सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्टिवेट किया या क्या किया। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड प्रोबेबली, बट डेटा हमने कभी मांगा होगा या कभी नेवर गोस, It never. या Split thing which you explained, in that, say, in May or June, when you split it up into two parts, and then you change the data for March 23. नहीं, दोनों रिकॉर्ड। जब भी आप एडिट लॉग EXE में आपको जब आप ये टैली देख रहे हो इधर डेस्कटॉप पे, whenever you see
अच्छा ये एडिट लॉग EXE पुराना वाला आ गया फोटो, बट ये टेली प्राइम एडिट लॉग में अगर आपने कर दिया तो आपको कुछ भी काम करो आपको रिकॉर्ड होने वाला। सर मैंने जब रीड करूंगा तो एडिट ब्लॉक में वो पूछेगा ना कि इफेक्ट ऑन व्हाट डेट यू वांट टू गेट एडिट ब्लॉक। नहीं, एडिट लॉग में एक बार डेटा आ गया वो डेटा आ गया, जूना भी आ गया तो जूना भी आ गया वो आ गया, जूना नया सब आ गया। आपको चाहिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने अभी एडिट लॉग में ले लिया है डेटा 15 अप्रैल या 20 अप्रैल को, यू स्प्लिट द डेटा एंड फिर से नया EXE डाउनलोड कर दीजिए नॉर्मल टेली प्राइम का और वहां पे चेंज कर दीजिए और फिर यहाँ पे आके अगर आपको मैन्युअली ओपनिंग बैलेंस है और वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको क्या हार्म है। हाँ, जो पहले की बैलेंस शीट है वो दूसरे EXE में आप कर लीजिए और इसमें आइए या प्लीज। डेटा ओवरराइट, अभी डेटा ओवरराइट कैसे, आप फोल्डर का फोल्डर पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, दिस यू आर डूइंग नॉट विदिन द सॉफ्टवेयर, आउटसाइड द सॉफ्टवेयर, दिस विल नॉट गेट रिकॉर्डेड, इसमें कुछ आएगा ही नहीं। कहां से मालूम पड़ेगा, सिस्टम को कहां से मालूम पड़ेगा, जो लेटेस्ट आएगा वो दिखेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है, मैं आपके एग्जांपल को एक मिनट सर, नो इंटरनेट टॉकिंग सर प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लोगों को चाहिए। मैंने फर्स्ट को डेटा फोल्डर बनाया, ओके 10,007 बना दिया, ओके, और यही डेटा फोल्डर चिंतन आपका नाम सर विरल भाई को ऑडिट के लिए भेज दिया, ओके 3-4 दिन मैंने काम किया उसके ऊपर, मैंने फर्स्ट को डेटा फोल्डर बना के भेज दिया। 5 तारीख को विरल भाई फिर से मेरे को वही डेटा फोल्डर भेजते हैं आफ्टर हिज वर्किंग। अभी विरल भाई पूछ रहे हैं कि ये फोल्डर जो भेजा है उसके ऊपर रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा, राइट? आपका क्वेश्चन यही है। मेरे पास टैली का नॉन एडिट लॉग भी है, मैं उसमें चला के चेंज करके फिर इसमें रिस्टोर करता हूं। हाँ बराबर है। सो अभी जो चिंतन का एग्जांपल है, चिंतन का जो एग्जांपल है उसमें 2 डेटाबेस बन गए, 10,007 अकाउंटेंट के पास, 10,007 चिंतन के पास, ओके। अभी 10,007 को उसने जो चिंतन के पास है, सॉरी विरल के पास है, विरल ने उसको नॉन एडिट लॉग में ओपन कर दिया, नॉन एडिट लॉग में ओपन करके 15 एंट्रीज कर दी, फिर उसको सेव किया, जो भी एंट्री सेव हो जाएगी, और उन्होंने मेरे पास भेजा। जब उन्होंने मेरे पास भेजा, अभी मेरे पास 2 ऑप्शन, क्या मैं मेरे करंट कंपनी के ऊपर रिप्लेस करूं या इसको सेपरेट फोल्डर नंबर दूं, ओके। इफ आई रिप्लेस इट इन माय करंट कंपनी तो मेरा जो 10 दिन का डेटा इन बिटवीन गया वो गया, वो चला जाएगा, बिकॉज फोल्डर अलग हो गया, ओके। तो आपने जो दिया है, मैंने जो काम किया वो पूरा डिलीट हो गया। अभी आपका काम इसमें टेली प्राइम में दे हैव गिवन द फंक्शनलिटी, क्योंकि अगर आपने ये फोल्डर नॉन एडिट लॉग में किया है ना, इमीडिएटली वो ट्रैक हो जाता है। आपको पूछेंगे जब आप माइग्रेशन करोगे नॉन एडिट लॉग में तो पूछेगा यू आर ओपनिंग अ टेली प्राइम एडिट लॉग डेटा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यू से यस, पीछे बीट बन गया, इट इज दैट। फिर 3 दिन काम किया और आपने मेरे को भेज दिया। 3 दिन बाद में मैंने जब उसको रिप्लेस किया, एडिट लॉग में फिर से ओपन किया, माइग्रेशन पूछा, तो उधर ये ऑल्ट के में बटन जो कंपनी है वहां पे बताएगा ऑन दिस डेट टू दिस डेट टेली प्राइम दिस डेटा वाज नॉट इन एडिट लॉग। ये क्लियर कट बताएगा, ये हाँ ये क्लियर कट बताएगा। अब वेदर दैट इंफॉर्मेशन is for you to report or not, that I'm not commenting on. See, because they are writing it is throughout the year. Throughout the year, What is just throughout the year? day-to-day basis, Tally will record it. Tally गैप में क्या हुआ वो रिकॉर्ड नहीं, वो नहीं रिकॉर्ड होगा, बिकॉज आपने नॉन एडिट लॉग फीचर में एडिट किया था, ओपन किया था। तो उसको एडिट लॉग में करने का मतलब, आइडियली यस, आइडियली एडिट लॉग में ही करेगा। we have to have edit log in our office also. Yes, you have to have both the EXEs, one for proprietors partnerships and one for this edit log. That is very clear. Where is the problem that the log, that what day that they not log, why you made the case 31st March on 30th June, and all those information which we are talking, we will Yes. not need as per audit purpose. Right. But the person who comes. Yes, they may have their own queries, Then questions. he will start from there. He will get a handle
Okay, system. 4 days you have made the entries on 31st March, on 30th June, and is getting ready-made masala to pounds from that. Now, you will hear me about these pounds. Next level change. Is there separate no or question? Yeah. Data is changed or altered. Yeah, we have to write in narration only when we change. 1 second, I did not get it. बोलिए. Suppose I have changed the vouchers. हाँ. It says I have changed the voucher. Okay. And I have changed. And is there any separate column which shows that voucher change for Yes. reason? Yeah. No, reason is not there. Is there any line? No, there is no line. Tally is not recording. Tally is not asking, not recording. Sir, please. What sir is asking? What sir is asking that shall Tally give a reason to record? But reason is something which the user will explain. Why should Tally ask that question? If you want, you can get it customized, but I don't think so it is required. Not Required, correct. But it may be asked by authorities that these are changed. So we can write in narration. we can change it, we can put it in narration. अच्छा अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चिंतन ने भी पूछा था और बाकी लोग एक दो जन ने और पूछा था कि ये मेरे को दिख गया कि ये 5 ट्रांजैक्शन 25 ट्रांजैक्शन या 50 ट्रांजैक्शन अल्टर्ड है, ये 50 मास्टर्स अल्टर्ड है. डू आई गेट इट एट वन प्लेस फॉर मास्टर्स एंड फॉर ट्रांजैक्शंस दैट व्हाट और हाउ मेनी चेंज वर मेड? ओके, डू आई गेट दैट? क्योंकि आपको एक एक अगर देखना है, मेरे को मास्टर में जाके देखना पड़ा. वर्जन 4 was 10 lakh, version 3 was 1 lakh, version 1 was 10,000. मतलब ये अलग अलग मेरे को बार बार जाके देखना पड़ा. और क्या मेरे को ऐसा कुछ है is what I understand. जैसे अभी ये 10,000 अक्टूबर 21 में जब ये सॉफ्टवेयर आया, not much were enthused. Some of our very few clients had actually gone ahead and performed Tally edit log में आया था. So Tally was also not much aware कि भाई when it is given a system but users के feedback नहीं थी. Okay, the same 2.1 release is continued till now. What I am expecting in the very near future is that Tally currently it is not giving any option. जो version 4, version 3, version 2 भी दिया है ना, उनका भी ना export दिया है ना print दिया है. User can screenshot and keep it as of now. Okay, अभी वो दिया नहीं है, but in the near future it will allow the export or print of that. और एटलीस्ट व्हाट आई अंडरस्टैंड के कौन से मास्टर्स कितनी बार मॉडिफाई, वर्जन्स उसका काउंट अगर आ जाए, या कौन से ट्रांजैक्शंस कितनी बार मॉडिफाई, सो द ऑडिटर कैन यूज हिज प्रोफेशनल जजमेंट. चलो 2 बार मॉडिफिकेशन इज आई एम समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टिंग एज अ नॉर्मल, बट अगर कोई 20 बार हुआ है तो लेट मी गो एंड चेक इट. तो नॉर्मल और वो उसका खुद का प्रोफेशनल जजमेंट है. बट टू गेट टू दैट पॉइंट आई एम होपफुल दैट Tally विल ब्रिंग इट. एज ऑफ नाउ इट इज नॉट देयर. नहीं, कुछ भी नहीं. Nothing is given as of now except for the screenshot. Nothing has been given. I am expecting not only the count but also the filtering, where if I can get, and that is what Matt, your expectation. I'm not speaking on behalf of Tally, but at least if I am feeling that I need to know more about modification in the GST value, or modification in narration, or modification in change in ledger 1 or change in ledger 2. If I want to perform that, can I perform it from that moment? Probably yes, but as of now it is not there. Filter is not there. Filter is not there. But they can get it, because what they had told us that this is a customized customizable working. But more than customization, this is default which is expected. Okay, ये default में ही expected है, क्योंकि see finally, while they are also not completely aware what is the expectations of the government, कि auditor को check क्या करना है. अब government का notification था reading those 2 paragraph, वो लेके आ गया. Audit क्या लाया है, who when, किसने किया, कब किया. अब आपने
सिक्योरिटी कंट्रोल एक्टिवेट नहीं किया इसके लिए अननोन आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हु एंड व्हेन दोनों आ गया. वन सेकंड इज कैन आई डिसेबल दिस ट्रेल? नो, क्लियर कट नो. If you disable it, it will record it. Date and timestamp available. So these are the two things that they have followed with a verbatim circular of whatever is mentioned. While we can think lot many other things from IT control perspective, from a security perspective, or from IP address or other things, बहुत सारी चीजें हो सकती है. But Tally has not got into that. Let us wait for some more time. User feedback से क्या audit करना, and maybe they will bring those changes. Yes, sir. Yeah. Yes. 5 minutes. Auto backup facility is not an inbuilt functionality of Tally. If you are using Tally Prime AWS, which is a cloud-based version, there you are getting the auto backup facility because there they are providing. For the users, it is users' responsibility to keep the backup. It is users' responsibility to keep the backup. Tally is not providing any auto backup functionality. Some of the users are using Tally Prime server. There they are having that functionality of auto backup if they have configured it. But otherwise, normal Tally, it is not there. It is for the users to do the backup or to do a maybe systems backup on a daily basis or incremental basis. Yeah. Daily basis or. Yeah, we can do it. 3 या 5,000 में आता है, which put the entire backup on the cloud. Yes, sir. Huh? Online, the systems are available currently, where your transaction you entered one, it records that it updates your backup immediately. नहीं, ऐसा नहीं होगा. Backup क्यों करेगा immediately record? As of now नहीं है. I'm not saying that. आपका डेटा टाइमली बेसिस पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड होएगा. मतलब आप दिन में आप कॉन्फ़िगर कर लो, मेरे को दिन में 3 बार बैकअप अपलोड करना है. हाँ बैकअप आप टाइम मतलब आपने 1 बजे बैकअप ले लिया, सुबह 9 बजे आया, 9 बजे बैकअप चला क्लाउड पे. ओके, फिर 1 बजे फिर से जाएगा, बट 9 बजे से 1 बजे में आपने 25 एंट्रीज की होगी तो हर 25 एंट्री का बैकअप जाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, दैट वुड बी टू मच टू आस्क, बिकॉज़ फिर आपको कंट्रोल नहीं रहेगा, उसका फिक्स टाइम रहता है. जनरली आई हैव सीन बैकअप सॉल्यूशंस व्हिच इज वर्किंग ऑन अ फिक्स टाइम. या ऐसा. ठीक है. अभी एक स्प्लिट डेटा का एक क्वेश्चन आया था, तो लेट मी एक स्प्लिट डेटा, एक डेटा अपन स्प्लिट कर लेते हैं.